Good morning students. Today I am going to teach you embryo development. Okay. So embryo का फॉर्मेशन हम लास्ट टर्न पे जो बनाना था उसे हमने बना लिया था. कैसे एम्ब्रियो बना था आपने डबल फर्टिलाइजेशन कराया, एंडोस्पर्म बना, ठीक है ना. अब वो डिवाइड करेगा एंड आप देखो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है. एम्ब्रियो कहाँ बनेगा आपका? विद इन ओव्यूल. ओके. So embryo development, there are two types of embryo on the basis of two kinds of plant. Okay, dicot plant and monocot plant. If we are talk about dicot plant, it have dicotyledonous embryo and in monocot monocotyledonous embryo. Okay, for example आप ग्राम देखे होगे चना सब. अगर हम देखें कि डाइकॉट कैसे उसे कह सकते हैं तो आप देखे होगे जब वो स्वेल करता है और बीच में उसमें से स्प्राउट्स रिलीज होते हैं तो उस टाइम पे आप देखते होगे कि वो एकदम सेपरेट फॉर्म में टू सीड्स दिखते हैं उसमें, ठीक है ना. दैट इज डाइकॉट. एंड राइस या वीट आप उठा के देखना, उसमें कोई भी ऐसा डबल कॉटलिडन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसको हम सिंगल कॉटलिडन बोलते हैं. ओके. सो टुडेज टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. ओके. After fertilization, the fertilized egg is called zygote. Okay, and now it give rise an embryo. Okay, dicot in favorable condition divide to form two-celled stage. Okay, and this two-cell stage, upper cell is known as basal cell and lower cell is known as terminal cell. Remember student, basal cell always at the micropylar end and terminal cell is always at the chelazal end. Okay, now it further divide to form four cell stage. Basal cell divide to form two cell and again terminal cell divide transversely and form two cell. Okay, now this basal cell is continue divide to form 7 to 8 cell stage and this is called hostorium. Okay, and terminal cell not divided and it at the same stage like two celled stage. Okay, now again it divide, this basal cell divide and last basal cell form a hostoria, globular hostoria, and below the cell is known as suspensor and just above the terminal cell hypophysis cells are present. Okay, and now this terminal cell is divide transversely and form four celled stage. Okay, here four celled stage and this stage is known as four celled embryo stage. Okay, and now it further divide to form again it terminal division takes place in terminal cell have transverse division and it form 8 celled stage and that is known as 8 celled pro-embryo. Okay, this is suspensor cells and this is the hostorium. Now listen stage. This stage is a very important stage, that is globular stage, because यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो रूट हैं, जो भी आप डाइकॉट देख रहे हो उस डाइकॉट एम्ब्रियो में आपके प्लूम्यूल, रूट कॉर्टेक्स, बाकी सारी सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है. ओके, सो ग्लोबुलर स्टेज, दिस टर्मिनल सेल इज गो फॉर पेरिक्लाइनल डिवीजन. पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है? अभी तक आप देख रहे हो तो ये यूं डिवाइड हो रहा था, दैट इज ट्रांसवर्सली डिवीजन, बट नाउ दिस वन सेल डिवाइड लाइक दिस, one cell and two cell, again it divide like this, one cell two cell, divide like this, one cell two cell, and now it look like this, outer cell and inner cell. The outer layer of the cell is known as dermatogen which further form epidermis. Okay, and this is the inner cell, inner parenchymatous cells. Okay, so listen student, these all cells which is known as suspensor, this is the hostorium. These suspensor cell is behave like this. Inner two cells is further form root cortex, below the root cortex cells form root cap and these cells are form root tip and this is the hostorium. What is the function of hostorium? This hostorium is responsible for taking nutrition to the from the embryo. Okay, and this stage is known as globular stage. Globular stage is a 8 celled stage. Okay, and these 8 cell have a divide
divide by periclinally to form outer dermatogen and inner cells. Okay, तो ग्लोबुलर सेल आप याद रखिएगा ग्लोबुलर स्टेज में क्या क्या होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट stage is heart shape stage. Why it is known as heart shape? Because it look like hearts. ठीक है ना. These all cells which further responsible for formation of root. This is the haustoria and these cells are responsible for formation of plumule. Okay. नेक्स्ट स्टेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. हमेशा एग्जाम में पूछता है कि इन विच काइंड ऑफ प्लांट हॉर्सशू शेप्ड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, मोनोकॉट और डाइकॉट. तो आपको पता होना चाहिए दैट इज हॉर्सशू शेप इज प्रेजेंट इन डाइकॉट एम्ब्रियो. ओके, दिस इज हॉर्सशू. हॉर्स का आपने लेग देखा होगा, उसके आगे का जो हिस्सा होता है वो कुछ ऐसे दिखाई देता है आपका. ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हॉर्सशू शेप. तो हॉट स्टेज से वो फर्दर सेल्स में डिवीजन होते हैं एंड वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज हॉर्सशू शेप. एंड द लास्ट जो ये स्ट्रक्चर तो हम एम्ब्रियो में देख रहे हैं. फाइनली जब हम किसी भी सीड को ग्रो कराते हैं तो आपको सीड ऐसे दिखाई देता है. ठीक है ना. सपोज आप ग्राम को ले लो, तो ग्राम को अगर हम ग्रो कराते हैं तो ग्राम के सेंटर पोजिशन को बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस. दिस एम्ब्रियोनल एक्सिस have epicotyle. EP means ऊपर की तरफ एंड कोटाइल मीन्स कॉटलिडन सेल. सो ऊपर की तरफ जो कॉटलिडन्स की सेल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लूम्यूल. और आपको पता होना चाहिए कि प्लूम्यूल गिव राइज टू स्टेम. ओके, एंड द बिलो इज हाइपो. हाइपो वर्ड हमेशा हम किसके लिए यूज करते हैं? बिलो के लिए. हाइपोकोटाइल एंड दिस इज कॉल्ड रेडिकल. दिस टिप, दिस रेडिकल इज फर्दर फॉर्म root. Okay, and these two are cotyledons. Okay, so this is the dicot embryo. and आपको ये वाला स्टेज कहाँ कैसे दिखाई देगा? आप देखो यहाँ पे ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है आपका एक एम्ब्रियो में. कैसे डाइकॉट एम्ब्रियो जो है आपका प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर. होप यू ऑल क्लियर दिस पॉइंट. ओके, थैंक यू.